Sharma sir. Vision India Forum welcomes CPSC Leaders Part 2, Series 2, Gold Shaped Diamonds. R.N. Sharma, Ramna Sharma, the first founding chairman of Coal India Limited, the man who started the journey 50 years back as the chairman of Coal India. Sir, good morning to you. And it's such a pleasure to see you on the screen. Sharma sir, can you hear us? Amit, your video is getting frozen at times. Please check your connectivity. वागुड़ू जी को मेरा नमस्कार एनके गोयल। प्रोफेसर गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? बस जनाब। So we have old colleague Bhaskarachar. My friend Bhaskarachar is there on board, former chairman of Kamaraj Port, Kandla Port. He's also there representing the important merchant and shipping industry of India. NHPC, let us congratulate NHPC for being one of the supporting partners in this 50th year of NHPC. It's a brilliant opportunity for us to meet people from NHPC. Videos to be kept on the on mode, please. Otherwise, you are out of the show. Videos, please keep them on the on mode. And Narendra Kumar, Rajat Gupta, please keep your videos on the on mode. Videos and audio on the on mode. Mr. Gupta, ED. Okay. Sir, good morning. Ramna Sharma ji, good morning, sir. सर आपका ऑडियो ऑफ है, आपका ऑडियो ऑफ है, हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। वो मैम को बुला लीजिए। हाँ सुमान, हाँ आपका ऑडियो ऑफ है। सर मैम को बोले थोड़ा हेल्प करें आपको ऑडियो के लिए। ओके, वी हैव द सेलिब्रिटी गेस्ट विद अस, अनूप जलोटा। अनूप जलोटा जी इज ऑन बोर्ड। रामनाथ शर्मा जी आपका ऑडियो ऑफ है सर। म्यूट हो गया। अभी ठीक है, म्यूट अभी हट गया था। Guys, you'll have to understand he's 101 years old. सर आपका म्यूट हटा दीजिए, म्यूट। रामनाथ शर्मा जी। शर्मा जी हमारे इंस्पिरेशन है, 101 साल में। हाँ बिल्कुल, इतना काम कर रहे हैं, देखिए हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। सर आपका म्यूट हटाइए। मिस्टर अनूप जलोटा जी, आपको मेरा भी नमस्कार। एनके गोयल सर, गोयल साहब, रिगार्ड्स। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। आर.एन. शर्मा जी अपना म्यूट हटा दीजिए। प्लीज आस्क समबडी टू हेल्प यू विद द म्यूट। हेलो। हाँ अब आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। गाइस, दिस इज 101 ईयर ओल्ड फॉर्मर चेयरमैन कोल इंडिया आर.एन. शर्मा विद अस। सर फिर म्यूट हो गया, फिर आपका म्यूट हो गया। किसी को बोले थोड़ा हेल्प करें आप। I think he's pressing 2 times. आप एक बार क्लिक करिए, अनम्यूट हो जाएगा। शर्मा जी, आर.एन. शर्मा जी। रजत गुप्ता एंड किशन कुमार। हाँ जी सर।
नहीं, इट्स ऑफ। उनको एक बार क्लिक करने बोलो, एक बार। उनके जो साथ में थी लेडी, उनको बोलिए ना हेल्प करेंगे। वीडियोस, देवेंद्र झाझरिया इज देयर विद अस, पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया पद्म भूषण, अनूप जलोटा जी पद्मश्री। These are all celebrity guests who have Devendra Jhajari, the president of the Paralympics Association of India. देवेंद्र जी वीडियो ऑन कर लीजिए, all videos to be on mode. अनूप जी नमस्कार, अभी आप लखनऊ जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू लखनऊ। नमस्कार, बस दिल्ली से फ्लाइट ले रहा हूँ लखनऊ। संगीत नाटक अकादमी का फंक्शन है, अनूप जी उसके लिए जा हम रहा लोग शुरू करना चाहेंगे आपकी दो लाइनों के साथ। हूँ। जरूर जरूर, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है कि काशी बदली अयोध्या बदली। सब लोग जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई है, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी बन गई है। लेकिन यहाँ पे काम समाप्त नहीं होता है, आगे देखिए। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो प्रगति है वो कभी रुकती नहीं। एक जमाना था जब हम कलाकारों को राजा महाराजा लोग सपोर्ट करते थे, राजा महाराजा लोगों के यहाँ कलाकार लोग रहते थे, वो सारा सपोर्ट देते थे। वो जब खत्म हुआ तो आ गया पब्लिक सेक्टर। बिरला ने कितना किया कलाकारों के लिए, टाटा ने तो पूरा आईपीसी देखिए कलकत्ता में जो है, उसमें कितने ही कलाकार लोग अपना संगीत पेश करते हैं, सिखाते हैं। तो समय समय पर ये नाम बदलते हैं, लेकिन लोग करने वाले वही हैं। जो वो राजा थे, आज वो टाटा है, आज वो बिरला है, आज वो अंबानी है। अंबानी कितना करते हैं देखिए, लोगों को, कलाकारों को एक बहुत बड़ा स्थान दे दिया अपनी परफॉर्मेंस का। तो ये जो सपोर्ट है हर तरफ से, वो हर एक फील्ड के हर लोगों को चाहिए। और उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पब्लिक सेक्टर का भी और हमारी गवर्नमेंट का भी। तो संगीत नाटक अकादमी जैसे संस्थाएं बना के हम लोग को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। अनूप जी मतलब आपने इतने सालों में आपने काफी सारी पब्लिक सेक्टर्स के साथ में काम किया। ये जो समावेश आज हम लोगों ने संगोष्ठी का आयोजन किया है, ये संगोष्ठी का उद्देश्य है कि पब्लिक सेक्टर के जितने पुराने दिग्गज थे वीडियो ने, उन दिग्गजों को हम लोग फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं। उन लोगों का कारण, उन लोगों के कारण ही आज पब्लिक सेक्टर यहाँ पहुंचा है। एनएचपीसी जैसी संस्था, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी संस्थाएं जो 50वें साल में है, और एचपीसीएल जैसी संस्था भी जिसका 50वां साल है इन टर्म्स ऑफ देयर रीनेमिंग इन द ईयर 1974। अभी ऐसी जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने परफॉर्मिंग आर्ट्स को बहुत प्रोत्साहित किया पिछले 50-60 सालों में। बहुत किया। आपने किन संस्थाओं के साथ काम किया और आपका कैसा इसमें किस तरह का आपका तजुर्बा रहा, और आने वाले समय में आईसीसीआर जैसी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट भारत की सरकार की संस्थाएं हैं, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, और आप पब्लिक सेक्टर से कैसा किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले समय में नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिले। सच तो ये है कि कोई सेक्टर ऐसा बाकी नहीं है कि मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों के साथ काम न किया हो। मैं तो अभी भी करता रहता हूँ। इन लोगों का सहयोग जो है वो बहुत ही जेन्युइन होता है, बहुत जेन्युइन सपोर्ट होता है। जेन्युइन सपोर्ट से मतलब है कि वो उन कलाकारों को ही सामने लाते हैं जो इस योग्य है, जिनकी योग्यता हो। ऐसे वैसे को नहीं कि मेरा भतीजा है और मेरा चाचा है और मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उनको ले आए। नहीं, उन लोगों से ये स्टैंडर्ड खराब होता है। तो ये लोग हमेशा अच्छे लोगों को लाते हैं। और आज हमारे साथ
बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं जिन्होंने पद्म भूषण प्राप्त किया है। ऐसे लोग जुड़े हैं जो आज 101 वर्ष का जिनका अनुभव है। उन सबके आशीर्वाद से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और कलाकारों की जो पूरी श्रेणी है वो बहुत संतुष्ट है कि बहुत सुंदर ढंग से सबको सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू। अनूप जी, आप थोड़ा देर, जितना देर आप रह सके रहिए। नाउ आई विल कॉल ऑन टू स्पीक देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया इज पद्म भूषण। हमारे देश का वो गौरव है। और इनफैक्ट ही इज द मैन हु वन गोल्ड मेडल, ही इज अ ट्वाइस गोल्ड मेडलिस्ट इन द पैरालंपिक्स, जिसमें भारत का बहुत नाम रोशन हुआ। इंडिया हैज बीन मेड प्राउड इन द पैरालंपिक्स इन द करंट एडिशन आल्सो। Devender has been courteous enough to join us even in the last minute request. And Paralympics is a field wherein people who are specially able get into the Olympic level of sports and make the country proud. देवेंद्र जी, पैरालंपिक्स के साथ में पब्लिक सेक्टर कंपनी का कितना बड़ा एसोसिएशन हो सकता है, और कैसे प्रोत्साहन पब्लिक सेक्टर पैरालंपिक्स को दे, ताकि आने वाले समय में हम लोग देखें कि पैरालंपिक्स पे भारत का नाम और रोशन हो। ओवर टू यू श्री देवेंद्र झाझरिया जी। सबसे पहले थैंक यू अमित जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। दूसरा, आप जो जोड़ने का काम करते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे आप हम सबको लेकर के आए, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं बताना चाहता हूं कि अनूप जी जलोटा के साथ ही मुझे 2012 में पद्मश्री मिला था, और 22 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। 20 साल में देश के लिए स्पोर्ट्स किया तो मुझे कई सेक्टर में बहुत कमियां नजर आई कि यहाँ पे यदि कॉरपोरेट घराने के लोग यदि एंट्री करते तो शायद हम और मेडल जीतते आज से 20 साल पहले। आज मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूं, और आपने देखा होगा 60 साल में हमने 30 मेडल जीते थे पैरालंपिक खेलों में, और अब की बार हमने अकेले पेरिस पैरालंपिक में हमने 29 मेडल जीत के साबित कर दिया दुनिया में कि भारत है वो स्पोर्टिंग है। वाह, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि जब 100 साल हम आजादी का वर्ष मनाएंगे तो उस दिन हम विकसित भारत बन करके मनाएंगे। उस विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है, उसमें यदि पहली सीढ़ी किसी ने आगे होकर के चढ़ाई की है पहली सीढ़ी पे, तो वो दिव्यांग खिलाड़ियों ने की है, क्योंकि हम मेडल टैली में 18वें नंबर पर रहे हैं 200 देशों में जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा लक्ष्य है कि 2036 में इंडिया में हम ओलंपिक, उस श्रेणी में मैं चाह रहा हूं लोग मिलकर के काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इंडिया में हम ज्यादा से ज्यादा इवेंट करवाएं, जैसे वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स इंडिया में करवाएं। हम वर्ल्ड एथलेटिक्स की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में लेकर के आए। यदि वर्ल्ड एथलेटिक्स हमारे पास आ जाती है तो हमारी मेजबानी का बहुत बड़ा दावा बढ़ जाएगा। लेकिन वो मेजबानी करने के लिए अकेला पीसीआई प्रेसिडेंट, पीसीआई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया नहीं कर सकती, भारत सरकार भी अकेला नहीं कर सकती। इनमें हम लोगों को जरूरत रहती है कॉर्पोरेट की, कि हम सब मिलकर, पब्लिक सेक्टर हमारे साथ आए, हम मिलकर के काम करें, ताकि दुनिया में ये महसूस हो और दुनिया को नजर भी आना चाहिए कि हिंदुस्तान वाकई में ही अब स्पोर्टिंग राष्ट्र बनने जा रहा है। क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस रही है लास्ट पेरिस पैरालंपिक की, दुनिया ने बहुत बड़ा अचंभा किया है कि इतनी कैसे परफॉर्मेंस दे सकता है भारत। ये बहुत बड़ी बात रही है। एक दो विषय पे मैं बात रखना चाहता हूं अपनी। हम आगे बढ़ने के लिए लॉस एंजलिस
हमारा टूर्नामेंट जो पैरालंपिक ओलंपिक आने वाला 28 में और 32, उनकी तैयारी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो 15 साल 16 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सीएसआर के माध्यम से हम उनकी हेल्प करते हैं। जो जहां तैयारी कर रहा है, कश्मीर में कोई तैयारी कर रहा है तो उसको कश्मीर में हम हेल्प भेजते हैं। अरुणाचल में कोई बेटी तैयारी कर रही है तो हम अरुणाचल में हेल्प भेजते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे सभी सुन रहे होंगे। 17 साल की, आप सबने देखा होगा, शीतल देवी। शीतल देवी ने, अमित जी, दोनों हाथ नहीं उनके, और वो आर्चरी गेम करती है। उनको सबसे पहले हेल्प कोई करने वाला था तो वो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया थी। उनको हमने पर मंथली उनको हम भेजते थे पैसे, इक्विपमेंट के लिए, सप्लीमेंट के लिए। आज वो शीतल देवी 17 साल की उम्र में पूरी दुनिया में फेमस है, और पेरिस पैरा ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया देश को। कितनी बड़ी बात है वो, कितनी बड़ी प्रेरणा है वो। अब यदि जिनके हाथ नहीं, दोनों हाथ नहीं, वो मेडल जीतती है तो एक संदेश जाता है। जो व्यक्ति होपलेस है लाइफ में, उनको एक मैसेज दिया जाता है कि देखिए, जिनके हाथ नहीं वो भी मेडल जीत रहे हैं देश के लिए। हम अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। मेरा ये लक्ष्य है एज ए पीसीआई प्रेसिडेंट कि हम जो 700 डिस्ट्रिक्ट में है उनमें हम स्पोर्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करें, उनको सुविधाएं भेजें, हम ज्यादा से ज्यादा इवेंट करवाएं। यदि हमें ज्यादा से ज्यादा इवेंट करवाना है और हमें ओलंपिक तक पहुंचना है, हमें टॉप 10 में पहुंचना है, तो हमें ग्रास रूट पे जा करके काम करना हो। यदि हमारा पब्लिक सेक्टर से हमें हेल्प मिलती है तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा, और इस योगदान के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। समय समय पे हम इवेंट भी करवाते हैं, नेशनल करवाते हैं, बहुत बड़े इवेंट करवाते हैं नेशनल। और हमारे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि पैरा में भी खेला हूं और सामान्य खिलाड़ियों में खेला हूं, हम खिलाड़ियों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं। पहली बार ऐसा नेशनल होता है हमारा जिसमें कि खिलाड़ियों को रहने का फ्री सुविधाएं देते हैं, और खाना भी हम फ्री देते हैं सभी खिलाड़ियों को। हमारे कई इवेंटों में लगभग 1500 खिलाड़ी आते हैं, हम उनका इवेंट करवाते हैं, कंडक्ट करते हैं। और इसीलिए हम पैरालंपिक में हम आगे जा रहे हैं। ओलंपिक से क्यों जा रहे हैं कि हम ग्रास रूट पे जाके काम कर रहे हैं। आज हम 15 साल के लड़के लड़कियों को आइडेंटिफाई करके सीएसआर के माध्यम से जितना भी हमें हो पाता है उतना हम आगे उनको भेजते हैं, ताकि वो आने वाले समय में इस देश के लिए मेडल जीत सके। कोई यदि जिसके पैर नहीं है और वो दौड़ लगाता है, जो टोटली ब्लाइंड है वो जंप करता है, कितनी बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए ये। मैं तो इतना, मेरा निवेदन है सभी से, आइए हम साथ मिल करके इस देश को, खास करके पैरालंपिक मूवमेंट का आप पार्ट बने। हम मिलके काम करते हैं। अभी पेरिस पैरालंपिक में हमने शानदार परफॉर्मेंस दी, उसके आते ही हमने नया कोलिब्रेशन किया आर्मी के साथ। आर्मी के जितने भी हमारे सिपाही हैं, वो जब इंजरी होती है तो हम उनको तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आर्मी और अर्धसैनिक बलों में हम उनसे खिलाड़ी निकाल सकें और इस देश के लिए वो खिलाड़ी मेडल जीत सकें। उन्होंने आर्मी में तो सेवा दी है, लेकिन साथ में वो खेल के माध्यम से इस देश को सेवा दे रहे हैं। आर्मी की हम शूटिंग रेंज भी काम में लेते हैं। हम सब मिलकर के काम करेंगे तभी हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत हम बना सकते हैं। आपने मुझे बुलाया है, मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ अमित जी आपका, और रहूंगा। देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना डिटेल में हमें बताया संक्षिप्त में। आप थोड़ा देर रुकिए, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से आर्यन शर्मा जी का लगता है कि सर
आर्यन शर्मा अनम्यूट करिए सर, हम आपको सुनना चाहते हैं। आर्यन शर्मा 101 years old. He is the man who started Coal India. सर फिर से बंद हो गया, आप इसको ऑन करिए। शर्मा जी इसको अनम्यूट करिए। अमित जी ऑडियो में प्रॉब्लम। शर्मा जी एक बार अनम्यूट करिए सर। सर प्लीज अनम्यूट योर ऑडियो। Because without your listening to you, yes, now we can listen to you. Please speak. Yeah. I can't do any more. अब आप बताइए, आपका जो सफर आपने मेरे साथ में पूरा दिन शेयर किया था कि कैसे कोल इंडिया का सफर शुरू हुआ और कैसे 50 सालों में जेआरडी के साथ काम करने के बाद कोल इंडिया में आप आए। थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। No, Meeting is being recorded. ऑडियो की प्रॉब्लम है। किशोर जी आपके हाथ से एको आ रहा है, मतलब नॉर्मली ओके, कैन वी लिसन टू आर्यन शर्मा जी? आर्यन शर्मा जी, हाँ बोलिए। सर आपका जो ये सफर रहा, आप 101 साल के। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल गिव यू अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आपने सीपीएससी को जहां मतलब आपने जो जिस लेवल पे देखा है, 101 years old, आज भी आप गोल्फ खेलते हैं। मैं आपके घर गया, आपके साथ रहा पूरे दिन। वी आर सो प्राउड टू हैव यू टुडे विद अस। आपका जो सफर रहा कोल इंडिया का, कैसे शुरू हुआ और उसमें क्या मेन आपके चैलेंजेस रहे, थोड़ा सा हमें बताएं। कोल इंडिया का सफर शुरू हुआ जब कोकिंग कोल नेशनलाइजेशन हुई, तो उस वक्त जितनी माइन कोकिंग कोल बनाती थी उसे गवर्नमेंट ने 1971 में नेशनलाइज किया अक्टूबर में, और वो 212 माइन थे। तो उसके बाद दे वांटेड हाउ टू मैनेज देम। आई वाज देन द चीफ ऑफ माइनिंग इन विद टाटा स्टील, and I was approached that now I should take over that new company they have made, Bharat Coking Coal, and create them into a sort of a running unit, a comprehensive running unit. So that is where we started with. Now, within a short while, it was seen that colliery owners and operators of non-coking coal were taking the investment, they had stopped the investment in the area. So the following year, that was also taken over by the government into form what we call Coal Mines Authority. Then in 1975, Coal India was created, and that is where the work started. Obviously, it was expected that as we go along, there will be greater demand on coal, and also to improve the quality of work, improve the more scientific application, improve the quality of the people who work. So there are many set of issues that which had to be dealt with. I don't know whether you are hearing it or not. नहीं, हम लोग सुन रहे हैं, but okay. Before joining Coal India, and you were very much integrally a part of the JRT Tata Group. The basic issue was that during the previous 35 years, from 1951 to 75, the production increased from by 35 million. It became to 70, and the demand was high.
So the first steps were to start improving the quality of the life, improving the technology as itself, increasing the production, improving the quality of coal that you raise, and processing the whole thing. The whole process started. And unfortunately, till 1991, it was prices were administered. So the government had to support every time. It is in 1991 the government allowed the prices to be controlled by the company in accordance with the foreign market. And although even with that, Indian coal prices have been kept still lower, 10 to 15%, but it gave an opportunity for Coal India to work it out, bring some money, so don't have to go to the government for every investment. And that is how the whole process started. Meanwhile, to developing people, giving them skills, technology, and working up. And the outcome today is we are producing almost 700 million, 750 million tons of coal. And still we find short. I think there are about 200 million are imported sweet. And part of the imported is coking coal, and part is non-coking coal for the powerhouses which are along the coast, where the cost of transportation, Indian transportation, high. So, and it is expected to go up to 1 billion. Now there is a slight conflict coming in, and greenhouse gases and environment. But as far as India is concerned, coal will continue to dominate and produce coal for power, and we need a power a lot more. Although there is a lot of improvement, there is solar power coming up, hydrogen, green hydrogen coming up, and HPC also doing their part. But our power needs are going to grow. If somebody say Viksit, already you see there's a great jump, and the power will continue growing over this. So that is what, in short, the Coal India have been doing. And also they are aware that when they go, they affect the people who live around there. There are people to whom the land belongs. So their rehabilitation, their working up, and their future also a part of the colonial responsibility. And they use judiciously a lot of CSR funds. And Coal India has fairly good size of funds available, but it has to be in consultation with the state governments with the mines exist. This is roughly the issue. Sharma ji, you transitioned from the private sector to the public sector. Sir, you transitioned from the private sector because you were with the Tata Group. Yeah. And how challenging was it? Because in the 75 era of 74, 75, there were so many public sector companies, though ITI was the first one which came on board in 1948. But post the industrial policy in 1951, there were so many public sector companies. But what was your experience like working with Mr. J.R.D. Tata? Now you have to appreciate that when you work for a company, in our case, my case, Tata Steel, it was specific requirement of Tata Steel for which we work. Therefore, the culture of work, the requirement of work, the environment in which is quite different than what is required in the public sector. And the reason why I also agreed to be in the public sector was to contribute to at the national level and meet the requirements of the coal that the nation wants. But both are different, but at the same time, both public sector and private sector have good people working there. Each one of them, given the freedom, can do as good as the other one. There is no difference. And there was a time when there used to be some interference with the ministries and all that, which is very much less now. Now all these companies operate more or less like the private companies because they're quite aware
that they are being watched and they are accountable to use the resources and give the product that is expected out of them or the service that is expected and at a competitive rate. Now the situation, therefore the situation is different, but I think it is both competitive and both comfortable. I have been very comfortable in the public sector. I have been equally comfortable. After even I have completed my coal India tenure, I came back to Tata Steel. I managed some of the companies and managing director, chairman, and all that. But another 15 years I put in. So there is no difference. And then I've been associated with other companies. I know on their boards. I think each one has a different culture, and each one has a core purpose for which they exist, and therefore they mold themselves accordingly. Sir, today the talk is about zero carbon, net zero. Talk is about reducing the carbon footprint that is becoming the global benchmark for supporting sustainability. Coal and carbon footprints. These are challenges which the country faces, even from the trade barrier perspective, especially in the European markets. And India's bargaining power is obviously dependent on how it utilizes or optimizes the use of coal vis-a-vis development. What are your views on this particular important issue in the wake of the climate issues that are raked up very, very vociferously nowadays on the global platforms? Sir, should I repeat my question? Hello? Sir, should I repeat my question? The carbon footprint is a challenge which the country is facing. Sharma ji, should I repeat my question? Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Okay. Carbon footprint is a big problem, and the challenge facing the country is to maintain an equilibrium between reducing the carbon footprint and the global development index, wherein the European and other nations are putting a lot of trade pressures on India. What do you think are your views on the utilization of coal vis-a-vis development goals of the country? Okay, it's a straightforward. There are two parties involved in the process. Coal India has to make the coal cleaner so that there much less dust will produce. That is one. And then is the power generator. Then they have also got to use their own power generation, ignition, and all that. And the gases they throw out, they got to really make it cleaner. So it's a combination which is yet to be done. But ultimately, let's understand, less or more. There are a lot of operations being aimed, carbon control, capture them and bury them underground. And all the same, that so long as hydrocarbons are there will be greenhouse gases, but they can be reduced. They can't be eliminated. Okay. And all these countries which are now pressing you, in their own time, they have done the same. And now that they're more stabilized and their population is less, they don't take into consideration if they go by per head gas produced, then we find India produces the least. So it's a struggle which will continue. And now that already renewable gases, power is coming up, increasing, so the percentage will be less, but it's not going to be eliminated totally. Sir, very well noted. You worked with so many prime ministers right from the times of Mrs. Indira Gandhi. And you also saw the transition from the Gandhian days because you were part of that convention probably of the International Congress in the 40s. And then you also saw the prime ministers one by one, Jawaharlal Nehru,
Gandhiji, Shastriji, and you worked with so many prime ministers, especially during your time as the chairman of Coal India. What was your experience like working with these different great leaders of their times? Look, there's some other prime minister we have seen from a distance, say from Mr. Nehru. I met him once or twice, but just incidentally only this. Shastriji, when he came over, I took him around to show up, but he wanted to see Washery at one time. And Mrs. Gandhi, I worked directly with her for almost 10 years. I worked very closely. And Rajiv Gandhi, I was on the energy advisory board to the prime minister. So to that extent, I contact Rajiv. After that, I have had Mr. Manmohan Singh. I knew him when he was in the planning commission, but as a prime minister, I did not. But each one of them, according to the situation, the country situation, the development situation, the international situation, have done their best that the country can grow up. And to say that prime minister, when the individual party with a total majority, the speed of transformation is faster. When there's a coalition, it slows down because you have to sort of find a compromise with each other. So there's you have to give credit to each one. For last 10, 15 years, the situation, 10 years entirely different. The pace is different, the thinking is different, and the situation, and international situation is also different, and the context with them, our ability to compete. And also, by the time the impact of the system that we started in technical, and the outcome of that is now giving the results. So it is not all at current, some is carried over from the past, which is showing up now. And what we are doing today, partly with getting the return for the future, the same thing will happen. So when you transitioned back from the public sector to the private, you went back to the Tatas and you had very close encounters with Mr. JRD for 50 years almost, or 30, 40 years, as you told me when I met you, that you worked with Mr. JRD Tata for 30, 40 years. And then we had this great leader, Ratan Tata, who passed away recently, left us recently. What were the differences in the leadership qualities you found in JRD vis-a-vis Ratan Tata? And then also you worked with Mr. Irani very closely. You see, it is not compared. When you are in the public sector, you are working for a large firm, and it is sort of a, there is no owner, although there are owners, government is the owner, public is the owner, but there is no such specific individual who will continue to be there. In case of, say, Tata, J.R.A. Tata was there, we knew it all the time. And his way of working was different, but your own targets and systems for the year, you have all the freedom to do the work. And you have also the freedom to take risks when you are getting the new technology, working it out. So there's a difference on this, but both have a purpose. So in 1991, Narasimha Rao absolutely changed the entire game. The entire ball game was changed after the liberalization, along in collaboration with Dr. Manmohan Singh. It is an individual, I included, who, according to a situation, has got to modify his own conduct, behavior, and expectation and ability to work. And where it is working with a company, working with the government are slightly different. But the people you work with, and that sort of a community you viable.
so to be available, so you have to be there with them. And that made no difference whether it is Tata's or whether it is the government. Your team, your work, then you lead them into that. So that is okay. This is quite different. So one very important issue is about the current situation wherein auctions. There was a lot of talk about the Colgate scam and all those things, but today the government is pressing on the auctions and mines are being allotted to private players. Do you think it has got a very good future, considering the kind of pressures coal is facing from the international, fraternity? Well, internationally, if you look at it, except China and India, who are the largest producers of coal, everybody else, as Europe has come down in production, UK has come down. The resources, other hydrocarbon sources. And at one time, USA also cut down their coal production, but they revived from this because there's a demand in Asia has demand for coal, but the West doesn't have demand for coal now. So there's an entirely different situation. We have to grow up, they have already grown up. And they have hydrocarbon and the gas here don't have in that quantity. So we are both are in different patterns. And sometime compared with China and India, there's no point. China's systems are different. Chinese government system, Chinese culture is different. Our culture is different. So it doesn't work out. But all the same, it is the discipline that we require, managerial discipline, leadership discipline, including the people who work with you, that has to be upgraded at every time and everyone. That is how the things work out. How did you handle mafia? That was the time when before the nationalization, the mafia was ruling. What is mafia? There are people who want to collect money at the cost of others. If you dry up the source of money, they are dealt with. You dry up the source, don't give them those contract level, give them that hardest one. And when they got to produce result, they don't get money. So see, the simple there. They are not anti anybody. They are looking at their money. So you have to protect your own corporation where you are operating. And you restrict the source of money, flow of money, funds to them. You have the control on them. And if we go by your experience, transitioning from the public sector to the private sector back, then there was a lot of pressure from the internal dynamics of your equations with Mr. Irani. Would you like to touch upon that? Hello. Yeah, we can hear you. We can hear you. Your equation. No. I told you yesterday that I have a commitment, so I got to have an next thing. Okay, before you leave us, anybody from the from the participants, Bhaskar Charji, Professor N.K. Goel, anybody you have any questions from the NHPC side? Any questions to this great leader at 101 years of age? He still enjoys his golf. So it is something from which you should be very motivated. So anybody wants to talk or say anything to him? Anyway, at the moment there's nobody. I'm just leaving. Thank you so much. Maybe next time you have, let me know. Sir, thank you so much for joining us and enlightening us with your brilliant. I'll keep the time free for you. Sir, you have been so generous and kind. This is a moment, these are moments which generations will not forget because this is being recorded and this will be shared for generations and people will remember this as probably, and I'm sure you will have much more shows with a lot of people, but so I am sure I'm very lucky.
Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you, Thank you. Anand Sharma ji. Thank you. No, you're not audible. You're mute, Mr. Amit. Okay. Bhaskarachar, let me welcome Mr. Bhaskarachar. He was the chairman of the Kandla port and also the chairman of the Ennore port. Somebody who's handled the ports for 30 years. And this is a very important sector today. And how do you describe your 30 years of leadership as a public sector leader, the challenges and the kind of achievements that you did during your 30 years career in the port sector? Seen on the screen, but nevertheless, since you asked me the question, as you know, the ports are the gateways for the import-export of countries' goods and services, without which no country can progress. A lot of imports are coming and exports are going. It's all through. These are the gateways from the country, entry and exit points. So many people may not know what is the importance of ports, but the ports are the leaders in facilitating the import-export trade, where they provide the infrastructure facilities like roads by national highways. The ports are also by the government, mostly by government. Now the private sector also has entered into the port sector in a large scale. So almost the private sector and the government sector, they are almost equal in their strength now. So the imports like coal, we were just now talking about coal. So import of coal, export of coal, or coastal movement of coal are all done, mostly done by sea. So sea means ships. Ships means there should be a port to receive and unload and load and unload the cargo. That is what happens, and all the oil, crude oil comes from various countries. The LPG comes to this country and all through the ports. The bulk cargo, the containers, all kinds of cargo which are bulk in nature, whether it's containerized or in break bulk or bulk, they all come through the ports. So there are ports which are catering to the needs of inland waters, and there are coastal shipping, and there are international shipping. So as of now, the ports have a capacity of major ports itself is having about 1,600 metric tons of capacity, and very good quantity being handled and getting every year. The ports are growing in its own way. The government of India is also supporting, and they are funding many projects, and so many projects are also taken up as per the government guidelines under PPP, the public-private partnership, where the private partners take up a project in the port, in the major port, and they consider the bar, they operate it for 30 years or so by sharing the revenue. Similarly, some ports have also big private ports also set up their own ports. They handle also huge cargo like oil, petroleum, oil, gas, petroleum, then fertilizer, containers, and so on. So these are the very important. It's a very important sector where the government is encouraging, and people are also participating. But the way forward is we have to create more and more facilities and produce more and more material to be exported through the ports. At the same time, there should be facilities for handling bigger ships. Ships are becoming bigger and bigger, be it bulk cargo or container cargo. So we need the deep ducted ports and increase the capacity. The last 10 years, I was told the capacity is almost doubled. Some 800 and 900 million tons to 1,600 is the capacity of the major ports alone. Private sector also have grown enormously, have grown their capacity. But still, a lot of things have to be done in order to compete with countries like Sri Lanka, China, and other countries. We need to set up more and more facilities, and more trade has to take place to the ports. So during my tenure, when I joined as PMD of Kamarajar Port in 2012, so the capacity of the port was about 38 million. And when I debuted the office in 2017,
we made it about 75 million tons. Now it is 90 million tons capacity. So that's how it has grown. And during my period, we have invested a lot of money through PPP and also from the port to develop the port infrastructure, setting up new berths, having more and more cranes, and having more and more deep draft berths. So this all enabled the ports to increase their capacity and cargo handling capacity. Similarly, all ports are doing their best, and everybody is contributing their to the extent possible. Government also supporting. I hope the ports should grow much faster than now, and there should be more and more production which can be exported, so that we earn more foreign exchange, and we also give more employment. So that's all. Thank you, Mr. Mamit, for giving this opportunity. Thank you, Bhaskaracharji. You know, what are your views on the kind of in India's port structure? Probably Mundra port has been overtaken by the Visakhapatnam port as the largest port recently, if I'm not wrong. Or is it still? It is still the largest port in this country. Not Visakhapatnam. The Paradip port is the biggest port now. Paradip and Kandla port, they are the biggest ports. Of course, Mundra also is a very big port. There is a huge investment coming up in Mumbai in the new port. I think that is the new Mumbai port. Vadhavan port, yeah. Vadhavan port. Okay, now there is a huge investment which is into thousands of crores. How do you think this will be, shaping India's trade and commerce in the years to come, especially with the kind of space and the kind of opportunities in the port sector and the new merchant shipping bill which is getting introduced in this particular parliament session? I think your voice was breaking in between. I hope what I heard is that. What is the kind of future for the trade and commerce with the new ports coming up and also the new merchant shipping bill which is being tabled in this session of parliament? See, the thing is, the government is trying very hard to computerize everything. The work of IT is in a great development stage. So I hope the trade will be more easier, and that's what government wanted to see, that there should be ease of doing business. At the same time, if you have more facilities, there will be more competition, healthy competition. So the trades will get benefit of the options of going to various ports at competitive price. At the same time, we can also compete with international ports like Sri Lanka, China, and other ports, port facilities, where we can attract the cargo from other international ports also. Like to transshipment, we can do it in our country, which is taking place in Singapore and other countries like Sri Lanka and other places. So we can also attract those cargo, and when there is a business cargo handling, automatically the trade will definitely benefit because of the reduction in their cost and time. How did you handle situations, or did you have sea crisis? The kind of sea crisis that we see nowadays, it is really very, very important. How do you handle such crisis if there were few during your 30-year-old career? No, I didn't hear you because there was a voice was breaking again. Sea crisis. How do you handle sea crisis during your tenure and going forward? What? Sea crisis. Sea crisis. The international water crisis. Oh, sea. Achha, okay. So that is up to the shipping lines and also government, they are taking care. But so far as port is concerned, we are here to provide the facilities like infrastructure facilities for loading, unloading, and also berthing, then transportation, inland transportation. So that's our role. Whereas the sea threats, etc., there are agencies that are taking care. So it does not come under the purview of ports itself. Yeah. Okay, we've got Miss Nalini with us. She is from NHPC. And then there's this Kishan Kumar. NHPC has been a support and associate partner in this particular summit. Would you like to say something from the renewable energy perspective? You're asking me?
No. I'm asking the representatives from NHPC, the solar team. Would you like to say something about the renewable energy future in this country? Okay, finally, Goel Saab, are you there with us? NK Goel? Goel Saab, are you there with us? Bhaskaracharji, thank you so much. It was wonderful hearing out. I'm sure all of us really enjoyed listening to the... Acha, we got Krishan Kumar back on the screen because till now we only had the chair with us. Krishan Kumar ji, are you representing NHPC? Yes, sir. Yes, sir. Would you like to introduce yourself and also speak a few things? Jal se Jyoti एक ऐसा, मतलब it is one of the most brilliant initiatives that I have got fond of. A Samat one that was launched by NTPC along with Jal Se Jyoti, both in your 50 years in the presence of Manohar Lal Khattar ji in the celebrations that took place on the 9th of November, as I have been told. Unfortunately, we were not part of it. But any which ways, Jal Se Jyoti, a comic book to introduce and inculcate the practice of loving, living, learning, and making it a part, inextricable part of their lives, the hydropower, the power of renewable energy, the future of India, the future of the world. Krishanji, introduce yourself and take us through this Jal Se Jyoti and the plans and the vision of NHPC going forward. Kishan Kumar ji, could you hear me? सर मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन जल से ज्योति एक ऐसा आप लोगों का एक इनिशिएटिव है जो सराहनीय है, बहुत बड़ा, बहुत महान इनिशिएटिव है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर ये जो जल से ज्योति की जो ज्योति आप लोग जो प्रज्वलित कर रहे हैं इस कॉमिक बुक के माध्यम से, ये बहुत हट के सोच है और एक ऐसी सोच है जो प्रधानमंत्री ने जब बच्चों को परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा उन्होंने किताब निकाली थी और हर साल बच्चों के साथ वो मिलते थे, ये बहुत शानदार एक इनिशिएटिव था। वैसे ही जल से ज्योति आपका इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मिलके लॉन्च किया 9 नवंबर को। एनएचपीसी के विषय में और जल से ज्योति के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, नमस्कार सर। सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया इसमें भाग लेने का, और सॉरी मैं किसी और मीटिंग में था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। बीच में आप एनएचपीसी में किस पद पे हैं? किस पद पे आप हैं एनएचपीसी में? हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और एनएचपीसी में मैं महाप्रबंधक के पद पर नियुक्त हूँ और फिलहाल मेरी पोस्टिंग है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन डिवीजन अहमदाबाद में है। मतलब हमारा जो काम है, जैसे एनएचपीसी तो ऐसे सर 100% आरी कंपनी है, पोलियो है, वो है जल से बिजली बनाना, एक ये हमारी हाइड्रो पावर कंपनी है। और इसके बाद हम लोगों ने जो डाइवर्सिफाई किया, तो डाइवर्सिफाई करने के बाद हम लोगों ने विंड पावर प्लांट्स और सोलर पावर प्लांट्स इसमें भी एंट्री की है। तो हम इसको बोलेंगे कि लाइक वैसे तो हाइड्रो भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर हम इसको बोल सकते हैं न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, लाइक विंड एंड सोलर आर न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और इन फील्ड्स में एनएचपीसी का जो मतलब हमारा पोर्टफोलियो है, इसको हम लोग अहमदाबाद से देखते हैं। अब आपने पूछा कि हमारा ये जो जल से ज्योति वाला जो हमारा विजन है सर, जैसे ये कि बेसिकली एनएचपीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक वर्किंग आर्म है। जैसे मतलब बाकी जो सीपीएसयू होते हैं, सीपीएसयू का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका काम है कि देश के लिए भी जो गवर्नमेंट के साथ अपनी कंधे से कंधा मिलाकर जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें भी अपने को शेयर करना होता है। और आजकल तो खैर जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉर्पोरेट्स के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप सीएसआर से कुछ फंड्स आप इसमें कीजिए खर्च समाज की सेवा के लिए। और उसका जो बेसिक पर्पस था गवर्नमेंट का, लाइक गवर्नमेंट मान लो हमारे को कुछ बोला गया कि हमारे को इतने अपने प्रॉफिट का इतना % खर्च करना है, तो उसमें गवर्नमेंट का ये था कि लाइक सीपीएसयू की एक अपनी एक्सपर्टाइज है, उनका एक अपना विजन है, क्योंकि लाइक हम जो बोलते हैं जो पीएसयू है ये प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, मतलब वी आर नॉट प्योर गवर्नमेंट कंपनीज। लाइक गवर्नमेंट के अंदर तो हमारा पर्पज होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सीपीएसयू में एक विजन होता है, आपको एक बिजनेस विजन से चलना होता है। और इसके साथ साथ में आपकी बिकॉज ऑफ योर फील्ड आप बहुत सारे ऐसे एरियाज में हैं जहां पर मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट की पहुंच ना हो। अब बात करें हम एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी की जो मेनली जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो बहुत दूर दराज के इलाकों में हैं। और मैं लगभग 23 साल सर हाइड्रो प्लांट्स में रहा,
तो वहाँ पर जैसे जो लोग थे मतलब वो यही बोलते थे कि सर जो ये एरिया है ये इतना रिमोट एरिया था, यदि यहाँ पे एनएचपीसी नहीं आती तो यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। और उसी मतलब कि जो हमारी इसको एक स्टैंप भी बोल दीजिए कि भाई हम वो काम कर सकते हैं जो शायद गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो। तो इसी विजन के साथ हमारे को ध्यान में रखकर हमारी जो कंपनी है उन्होंने माननीय जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलकर ये जल से ज्योति विजन शुरू किया है। और हमारे को ये कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर एनएचपीसी की पहुंच है, एनएचपीसी का एक मतलब नाम भी बोल सकते हैं और काम भी है, दोनों चीजें हैं। वहाँ पर हम लोग मतलब एक अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें सर दो चीजें हमारी इसमें हैं। एक तो ये कि भाई आपने लोगों को ये बताना है कि जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मतलब मान लो कि आज का देखा हुआ सर एक इंडिया में कल्चर है कि लोग प्रोजेक्ट्स को अपोज करना। आपको मुझे समझना होगा कि जो हाइड्रो है एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल है, लाइफ लॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जो हमारी जो यंग ब्रिगेड है यदि उसको हम लोग ये बात समझा पाएंगे तो ये उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और एनएचपीसी के लिए भी अच्छा है। तो सर इसी भावना के साथ में हमने जो जल से ज्योति एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसमें आपने इसको हाईलाइट किया, उसके लिए भी आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नहीं, अभी आप लोग देखिए जैसे यू आर दी वन ऑफ द लीडर्स ऑफ हाइड्रो पावर जी एंड सर। क्या ग्रीन हाइड्रोजन पे भी आप लोग काम करते हैं? सर जैसे ये कि एक ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है सर ये एक इमर्जिंग मतलब की फील्ड है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन में एनएचपीसी सर आज के दिन 3 पायलट प्रोजेक्ट्स कर रही है। मतलब ये बहुत छोटे स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि सर जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी है हमें उसको लर्न करने के लिए उसमें काम करना पड़ता है। और हम लोग अभी इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के प्रोसेस में हमारे अभी 3 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है सर ये लेह के अंदर है। तो लेह के अंदर हम लोग जो ग्रीन हाइड्रोजन से हम राउंड द क्लॉक पावर अपने जो गेस्ट हाउस है उसको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट नियर टू कमीशनिंग है और ये दिसंबर में कमीशन हो जाएगा। तो जैसे जो आपको बताऊं जो ग्रीन हाइड्रोजन है और हमारा एनएचपीसी का जो है मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अंदर एक साइनर्जी है और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में आने वाले समय में काफ़ी संभावनाएं आ सकती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब वो संभावनाएं आए तो हम उसको हार्नेस करने के लिए तैयार रहें। तो इसलिए हम इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। इनिशियली हमारे इनिशियल स्टेप्स ही हैं इसमें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के साथ में कोई कोलैबोरेशन है आप लोगों का? सर एज सच कोई कोलैबोरेशन नहीं है बट जैसे ये होता है कि वो हमारे एकदम से ना टेक्निकल एडवाइजर हैं। जब हम इस फील्ड में आए ग्रीन हाइड्रोजन फील्ड में तो सबसे पहले हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी नाइस की जो प्लांट है, नाइस के प्रेमिसेस में गुड़गांव में एक प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगाया हुआ है। तो हमने उनका विजिट किया था। उनसे हम लोगों ने मतलब कि बहुत सारे जो नॉलेज है इनिशियल नॉलेज ली। उसके बाद हम लोगों ने अपने प्लांट स्टार्ट किए और हमारे प्लांट में भी जैसे जो हमारे प्लांट्स हैं उसकी बहुत सारी जो स्टडीज हैं हम नाइस से करवाई हैं सर। तो मतलब ऐसा कोलैबोरेशन नहीं है लेकिन वर्क टू वर्क बेसिस पे हम उनकी हेल्प लेते रहते हैं और वो भी हमारे को हेल्प करते हैं सर। इंस्टीट्यूशंस में जो भारत के जो संस्थान है, महाविद्यालय है या फिर जो उच्च उच्च विद्यालय है, इन विद्यालयों में क्या इन विद्यालयों में भी आप लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, इनिशिएटिव्स दिए हैं? क्योंकि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के जो डीजी बने हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही आए हैं। एक सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने पूरा एएमयू के कैंपस को सोलर एनर्जी के माध्यम से विद्युतीकरण किया था। तो क्या उस तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ में भी क्या आप लोग कुछ कोलैबोरेशन कर चुके हैं या करने की आप तत्परता में है? सर जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के से कोलैबोरेशन, तो कोलैबोरेशन हम लोग हमेशा करते रहते हैं। मतलब ये डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। जैसे सर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर है तो वहाँ पर हम लोगों ने एक अभी 700 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया था। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमने प्लांट लगाया सेंट्रल तो यूनिवर्सिटी ऑफ अजमेर। जी सर, जी सर, जी जी क्या तो राइजिंग राजस्थान में तो आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। जी सर, जी 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 सर जी। वी शुड गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू एनएचपीसी जिसने इतना बड़ा काम किया है और देश की जगह जगह हर जगह राइजिंग राजस्थान के जैसे प्रोजेक्ट और बढ़ने चाहिए। प्लीज प्लीज टेल अस। हाँ जी, और इसके अलावा सर जैसे होता है कि हमारे डिफरेंट मतलब कि मॉडल्स ऑफ मतलब यू कैन से कोऑर्डिनेशन होता है हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे हमने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम लोगों ने अपने जो R&D फंड्स हैं उनसे बजट दिए हैं ताकि वो हाइड्रो के फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में या कुछ जहाँ पे उनकी अपनी स्पेसिफिक नीड्स हैं तो उस पर वो आगे काम कर सकें। इसके अंदर जैसे IIT रुड़की है, IIT दिल्ली है, बहुत सारे ये जो NITs हैं इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन चला हुआ है सर और हम उनके साथ मतलब काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। जहां पर आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं जनरली वो वाटर पॉइंट ऑफ व्यू से या पानी की क्षमता से पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही उपलब्ध जगह है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर काफी आप लोगों का प्लांट है या काम है, जहां तक मुझे पता है अरुणाचल प्रदेश। और कहाँ कहाँ पर एनएचपीसी के बड़े प्रोजेक्ट्स या प्लांट्स हैं? सर यदि बात की जाए एनएचपीसी की, तो एनएचपीसी का जो कोर एरिया रहा है वो है हिमालय। हिमालय स्टार्ट होता है जे से अरुणाचल तक। तो ये आप स्टार्ट करेंगे जे देन आपको हिमाचल आएगा, हिमाचल के बाद उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड के बाद उधर चलते हैं तो सिक्किम आएगा, अपना वेस्ट बंगाल आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो ये सारा जो एरिया है आसाम वाला, सबके अंदर सर मतलब कि ये हमारा मेन एरिया है, हमारा प्रोजेक्ट्स का मेन एरिया है सर। उसके बाद हमारी सब्सिडरी कंपनी है सर नर्मदा हाइड्रो तो डेवलपमेंट ये एरिया मेन क्यों है? पानी के लिए, गंगोत्री पानी के लिए, या ये सन रेज का कोई इशू है? एनएचपीसी। जी सर, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि सर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को दो चीज चाहिए होती हैं, एक पानी और एक हेड। तो हिमालय के अंदर क्या है सर, जो हिली रीजन्स हैं, हिली रीजन्स में आपको हेड वहीं मिल पाएगा। लाइक यदि आप प्लेन्स में आ जाएंगे तो आपको हेड नहीं मिलता है। तो हम लोग जो हिमालय का जो हमारा मेन रीजन है कि वहां पर हमारे को पानी तो है ही सर, साथ में हेड भी चाहिए होता है। तो दिस इज द रीजन कि हमारा जो मेन प्रोजेक्ट्स है हमारे वहां पर हैं, अपने हिमालय रीजन में है। उसके बाद हम बात करें ये जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है नर्मदा हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएचडीसी, तो उससे सर हम लोगों ने दो प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं सर, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, ये है एमपी के अंदर। तो मतलब वहाँ पर भी सभी ऐसा कि बिकॉज सर आपको ये है कि मेन अपने को हेड की जरूरत होती है, मतलब कि हेड और पानी दो चीजें चाहिए होती हैं सर। तो वहाँ पर मतलब कि अपना जो नर्मदा नदी है वहाँ पर हम लोगों को हेड और उसका पानी मिला, तो उससे हम लोगों ने दो प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है सर कि हम लोग क्यों मतलब कि हिल्स में जाते हैं, इसीलिए कि आपने को हेड चाहिए और पानी चाहिए। और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और थर्मल प्रोजेक्ट में सर एक डिफरेंस क्या है कि जैसे थर्मल प्रोजेक्ट्स तो आप जनरली कहीं भी ला सकते हैं, मतलब बेसिकली यू नीड कॉल, है ना, आपको कहीं भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो साइट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब आपको एक साइट पे जाके देखना होता है कि यहाँ पर हमारे को हेड मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और उसका हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक अलग डिजाइन होता है। थर्मल्स में जैसे डिजाइन का स्टैंडर्डाइजेशन है, हाइड्रो में ऐसा नहीं है सर। कृष्ण जी, वी ऑल्सो हैव योर कलीग फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु से आपकी सहयोगी भी है, नलिनी जी। नलिनी जी, वुड यू लाइक टू स्पीक अ लिटिल अबाउट द एनएचपीसी इनिशिएटिव्स इन द साउथ? नलिनी नलिनी जी, मैडम आप म्यूट हैं, नलिनी आप मैडम आप म्यूट म्यूट हैं, हैं। आप म्यूट हैं। Hello. Hello. Yes, we can hear you. Some initiatives from NHPC in the south, because right now we've been Sir? hearing about the hills being important. Yeah. Yes, we have this to be in CPSC projects in Andhra Pradesh, and then West Canada project. We have floating solar project, and at present we have this 50 megawatt solar power plant in Tamil Nadu, which I am interested. South. Thank You you. know, Kishan Kumar was telling us that being in the hilly regions is very important. How does the southern terrain serve the purpose of this renewable energy business? Because Tamil Nadu is different from Himalayas. Yes. Tamil Nadu is a plain, and south part is mostly plain, and we have hills also, like in Kerala and all, we have the Western Ghats, so we have the hills. But in Tamil Nadu, we can even people have put in south. Plains are very easy. Yeah, this thing. Okay, can you hear me? Can you hear me?
Can you all hear me? Well, sir. Yeah. Now we've got Professor N.K. Goel, the chairman of Cyber Security Association of India, and also he is somebody who is instrumental in working with so many top organizations of the public sector over the last 40, 50 years. He was also president of TMAI, Telecom Manufacturers Association of India. Professor N.K. Goel, over to you. Your experience with public sector and what are your suggestions so that the country becomes more enriched from the existence of the silver medal that we have within us. Sir, public sectors, I think you have got a very good panel here already and they have discussed a lot. But to me, it appears that public sector was started in the earlier days by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru because the interest of private sector was not there to put up the industries. There were lots of risks and lots of difficulties. So it started as a government project and as a government social responsibility. We should make steel, we should make textile, we should make telecom like this. After the gap of so many years, the private sector has been invited left and right to invest in all these sectors. So now today, there is a mix of private and public in all the sectors. Now the irony comes from the following. Number one, we expect public sector to work like a private sector, to compete and to give the profit. Number two, the public sector is governed by the rules of CBI, CIC, CVC, procurement manual, etc., 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 which private sector is not. Number three, the decision making, whatever we may say, even though every PSU has a board of directors which is fully competent, but finally somewhere it goes to the government or minister or finance department. So the decisions are delayed. Now this results into a situation where private sector performs better than PSU, and then all type of allegations coming in. Now my suggestion is a high time has come for the government to think if we really need the public sector. If yes, then we should give them full support and give them full freedom. If not, then we should not expect them to work as a commercial organization. For example, if in the case of telecom, we have one PSU BSNL. If they have to procure the things, they have to follow a number of formalities, GFR, procurement manual, all etc., which Airtel, Jio, Vodafone are not required. So how does it go ahead? So either you say PSU is for social cause or for responsibility, not covered with the commercial profit, or if commercial, then let them be away from the board. We mean the government appoints the board, the chairman, after lots of selections and lots of scrutiny, and then they are again subjected to same problem. So why this attitude? This is a problem with the public sector. But at the same time, I would say something contrary to what I said before. We need public sector as a counter check for the private sector. Take the case of telecom. There are 3 telecom operators: Airtel, Jio, Vodafone, and 1 BSNL. Now, if there is no BSNL, then these 3 operators will be doing XYZ. Now, at least they have a check of the BSNL. Suddenly, because of the vibrant policies of the Prime Minister and Mr. Jyoti Scindia, our Minister of Telecom, BSNL has become very active, very fast, and BSNL is gaining more subscribers than Jio and Airtel. So this way, it has to be there. So I am for it. I think for the time being, let's stop here. Thank you so much, Goel Saab. I think this is a wonderful, befitting kind of conclusion to this particular gathering today. For the lack of time of the parliament session going on, the lunch session is scheduled to be at around 1 o'clock, and henceforth a couple of ministers to join, Bhagat Kulaste and Shipat Naik, probably would be a little more delayed because just now received a message from Mr. Naik's office. Anyways, it's a befitting closer to this wonderful symposium today. We were graced by Anup Jalota, Devendra Jajaria, different fields, different viewpoints. Then we had Dr. Aryan Sharma, the great leader who talked about his great experience over the last 50, 60 years. In fact, over the last, I must say 70 years, as the leader from the private to the public and then back to the private sector.
I personally am always game for more independence, more authority, and more support to the public sector, because till date, with my experience of the last 25 years, if not more, I have never found the public sector lacking in any way. In fact, I have always found them more, kind of approachable, more fast, more professional, more receptive, more humble, and they've been more diligent in any way whatsoever than the private sector. It's a culture of the last 76, 77 years. We should nurture it properly, ensure that the country grows together, so that these diamonds of today, who were shaped by the golds of yesterday, finally each of them becomes a Kohinoor, which probably has gone away from us, but we already have got more than 100 plus Kohinoors with us. Let us keep nourishing them so that the country prospers more and more. Thank you, NHPC. Thank you, all the guests. Jai Hind. Namaskar. Thank you.